ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि याश्रयेत् पुण्डरीकाख्यं शभायावन्तरा शुचिः पुण्डरीकाख्यपनात् पुण्डरीकाख्यपनात् पुण्डरीकाख्यपनात्। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ पृच्छालय। ओम अश श्रीमद्भागवता स्तोत्र मंत्र नारद श्री बहति छंदः श्रीकृष्ण परमात्म देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम यजमानस्य सकल मनोरथ निर्विघ्न परमो सिद्ध्यर्थे ठाकुर श्री गोधननाथ के श्री चरणारविंदन की अचल भक्ति प्राप्ति हेतवे श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। ओम नारद से नमः श्री श्री बहति छंद से नमः मुखे श्रीकृष्ण परमात्म देवताय नमः हृदय ब्रह्म विजय नमः गुहे भक्ति शक्तये नमः पादयो ज्ञान वैराकीलकाय नमः नाभौ श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्धतक पाठ विनुगाय नमः सर्वांगे। ओम क्लाम हृदयाय नमः, ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्लूं सखाय वकटः, ओम क्लैं कवचाय हुम, ओम क्लौं नेत्रस्त्राय वकटः, ओम कलस्त्राय फटः, ओम क्लां उष्टाभ्यां नमः, ओम क्लीं तजनेभ्यां नमः, ओम कुलमनमाभ्यां नमः, ओम क्लैमनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लौं कृष्काभ्यां नमः, ओम कलह कर्तृकपृष्ठाभ्यां नमः। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरिमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतो वेणुना दलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विवलसद गोपी सहस्रावृतं हस्तन स्तन ताप बरगम खिलो किशोदारं किशोराकृति। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पिताशतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्राचीन बहिर्वाच भगवस्तेव चोऽस्माभिर्नः सम्यगवगम्यते कवयस्ततः विजानन्ति न वयं कर्म मोहित। नारदवाच पुरसं पुरञ्जनं वेद्यात् विनक्त्यात्मनः पुरम् एकदा त्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकं यो विज्ञाता हतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वर यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वक्रियागुणैः यदा जिघ्रचना पुरुषो कातस्नेन प्रगतिर्गुणां नवद्वारं देहास्तङ्घ्रे तत्रामानुतसाध्यते बोधिं तु प्रमदां विद्यां ममाहामिति च निकतं यामाधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमाना भोक्तेच्छभिर्गुणान् सुखाय इन्द्रियगुणां ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्ततः वृत्तयः प्राण पंचवृत्र यथोरगः बृहद्दलं मनोविद्या ध्रुवेन्द्रियनायकं पंचाला पंचविषयः यनमध्ये नवखं पुरम् अच्छणीनाशके कर्णौ मुखं शिष्णो गोदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तेन्द्रिय संयुतो अच्छणीनाशके आशो विति पंचपुराकृतं दक्षिणा दक्षिणाकर्ण उत्तराचोत्तरस्मत पश्चिमे इत्यथोद्वारो बुधं शिष्णमिहोच्यते सदिताविर्मुखे छात्र नेत एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वर नलनीनालनीनाशे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतमुख्यास्यं विवृणो वाग्रसवृद्यशो आपणो व्यवहारोत्र चित्रबन्धो बहूदनम् पितृहो दक्षिणाकर्ण उत्तरो देवहोष्मत वृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचाल संगीतं पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्युतः धरादविजेत् आसुरी मेढमर्वावो
वायो ग्रामीणं जति उपस्थो दुर्मदा प्रक्त निरतिर्गत उच्यते वैश्यसुं नरकं पायुर्लब्धकन्धौ त्वमेषणो हस्तपादोपमास्ताभ्यां यक्तो यात् करोति च अन्तःपुरा च हृदयं निशोषे च मनः उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदिष्टात्मा तद्प्रवृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्विन्द्रियाशो संवत्सरयो गति द्विकर्मा चक्रस्त्रिगुण तजा पंचाशु बंधुर मनोरश्मिर्बुद्धशोतो हृन्नीडो द्वन्द्वकुवर पाचेन्द्रियार्थप्रक्षेप सप्तधातु बरूथक आकूति विक्रमो वह्यो मृगतृष्णा प्रधावति एकादशेन्द्रिय चमुहो पंचसूना विनोदाकृत संवत्सर चंडवेग कालो यो नोपलक्ष्यत तस्य हानिः गंधर्व गंधर्वयो रात्र्यस्मत अनन्तायु पराक्रांत षष्ठयोत्तर शतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तान्नाभिनन्दति श्वासारं जग्रहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनश्चर भूतोपसर्गासुरय पंचारो दिविधो जर एवं बहुविधैर्दुःखै देवभूतात्मसंभवै क्लिश्यमाना शतं वर्षं देहि देहि तमोवत प्राणेन्द्रिय मनोधर्म नात्मन्याध्यस्य निर्गुणं शेते कामलवां ध्याय यन्ममाहमिति कर्मोकत यदात्मानमभिज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तोऽवसज्जेत गुणेषोऽपगते सदक् गुणाभिमानी च सदा कर्माणि कुरुतेव स सकलं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते सकलात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकनाप्नोत करहीचित दुःखोदर्कान् क्रियायास्तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्चिच्चो स्त्री क्वचिन्नो भय मनधवि देवो मनुष्य तिर्यगवा यथा कर्मा गुणं भव क्षुतपरितो यथा दीना सारमेय ग्रहं ग्रहं चरना विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वो तथा कामाशयो जीवो ओच्चावचपथा भ्रमन् अपरेधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियं दुःखे स्वेकतरेणापि देवभूतात्महेतसो जीवस्य न व्यवच्छेद साय चेतत् प्रतिक्रिया ताहि परशोभारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया नैकान्तता प्रतीकार कर्मिणां कर्म केवलं दयं ह्यविद्योपाश्रितं स्वप्ने स्वप्नायवानः अर्थे विद्यमानेऽपि संसतेन न वर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यथोऽनर्थ परम्परा संसतेस्ततः व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु वासुदेवे भगवते भक्तयोग समाहित सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजसे सादच्युत कथाश्रय क्षणवता शब्दधानस्य नेत्रदा सादधीयत यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशय भगवद्गुणानुकथन श्रवणाव्यग्रचेतसा तस्मिन् महन् मुखरिता मदभे चरित्र पीयूष शेष सरितः परिता स्रवन्ति ताये भवन्त वितशो न प्रगाढकर्णे सान् सतान् स्पशन्त सनत दभयशोकमेहा तस्मिन् महन् मुखरिता मदभे चरित्र पीयूष शेष सरित परितः स्रवन्ति ताये प्रवन्त वितशो न प्रगाढकर्णे स्थानास्पशन्त सनतड भयशोकमोहा एतरूपादतो नित्यं जीवलोक स्वभावजै न करोति हरे नूनं कथामित निधौ रतिं प्रजापते पति साक्षात् भगवान् गिरिशो मनो दच्छादया प्रजा दच्छ नैष्टिकासनकादय मरीचिरत्रांगे रसो पुलश पुलः क्रतो रघुवशिष्ठ एते मदन्ता ब्रह्मवादिन अद्याविवाचस पतयस्तपो विद्या समाधवि पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तो परमेश्वरं शब्द ब्रह्मण दुष्प्रारे चरन्तं उर्विस्तरे ममतलिङ्गैव वच्छिन्नं
भजन्तो न विदु परम् यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितो सा जहाति मतं लोके वेदे च परनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् ज्ञानदर्थकाशिषु मातदृष्टि कथा सोत्र स्पर्शेष्व स्पष्टवस्तुषु सालोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मो कमतद्विद आस्तिरदर्भै प्रागग्रहि कातस्नेन चितमण्डलं स्तब्धो बृहद् बृहद्वदान्मानि कर्मणावेशयत्परं तदकर्म हरेतोषं यश विद्यातनमतिर्यया हरिदेहाभितामात्मा स्वयं प्रकटरीश्वर तदपादमूलं शरणं यदा क्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयवन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरि नारदोवाच कृष्ण एभिः संच्छेन्नो भवतः पुरुषर्षभो अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं क्षुद्रच्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिं गणसा मसलोदकर्णम् अग्रे वृकानशुतपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलोदकबाणभिन्नम् अशार्थः शोमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्प मधु गन्धवात् क्षुद्रतमं काम्य कर्म विपाकजं कामासुकलवं जह वयोपस्थ्यादिः विचिनवं तं मिथुनी भूय तदभिनिवेशित मनसं सडङ्घ्री गणः सामगीत वदति मनोहर वनितः द्विजनालापेष्यति तरमति प्रलोभित कर्णमग्रे बकयूथ वदात्मना आयुर्हरतोर्होरात्रं तान् कालः लव विशेषानः विगणय्य गृहेषु विहरन्तो पृष्ठत एव परोच्च मनुप्रवृत्तो लब्धकाकतान्तोऽन्तः सरेण यमिह पारभिद्यति तमिमा मात्मानमहोराजन भिन्न हृदयं द्रष्टुर्महर्षीति स त्वं विचक्ष मृगचेष्टतमात्मनोऽन्तश्चेत्तं नियच्छ हृदि कर्णध्वनि च चेत्ते जय्यङ्गनाशमसत्तमयूथगाथं प्रीणीयहंस शरणौ विरमक्रमेण राजोवाच श्रुतमनवीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नेतज्जानं तुपाध्याय किं न ब्रूयु विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र संच्छेन्न तद्गतो महान् रसयोपेह मुह्यन्ते यत्र नेन्द्रियवृत्तयो कर्मण्यारभते येन पुमानीह विहायतम् अवत्रानेन देहेन ज्योष्टानि स यदश्नुते यदि वेदविदं वाद सूयते तत्र तत्रः कर्म यत् क्रियते प्रोक्त प्रोक्षं न प्रकाशते नारदोवाच ये निवारभते कर्म तत् तेनेवामत्त तदपमान् भोक्ते ह्यभ्यवदानेन हिलिङ्गेन मनसा स्वयं शयानामिमः मुदा सज्जा स्वसन्तं वरसो यथा कर्मात्मन्नाहितं भोक्ते तादृशेनेतरेण वो भ्रमयिते मनसः यद्यदसावहमिति उग्रना गृहीयात् तत् पुमानजाद्धं कर्म येन पुनर्भव धानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियैः तै एवं प्रागदेहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवत्तभिः मानभूतं कशानेन देहे नाष्टमसूर्तम कदाचिदोपलभ्येत यद्रूपं यद्गात्मनिं तेनासतादसंराजल्लिङ्गनो देह सम्भवं श्रद्धतः स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्पष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाण संसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव च भविष्यत अधष्टमाशतं चात्नो कवचन मनसि दश्यते रातथानो मंतव्यं देशकालक्रियाशयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसेन्द्रियगोचर आयन्ति वर्गसोऽयन्ति सर्वे समनसो जन सत्यकनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तने तमश्चन्द्रमसि वेदमुपरज्यावभाषते नाहं ममेत भावोऽयम् स्वसेव्यवधीयते यावद् बुद्धिमनोच्छात गुणव्यूहो ह्यनादिमान् स्वप्तमोक्षोपतापेषु प्राणाय विघाततो नेहतेऽहमिति ज्ञानं प्रमृत्यु प्रज्वारयोरपि गर्भे बाले पौस्कल्यादेकादश विधं तदा लिङ्गा न दश्यते यूनाकुः
कुहवां चन्द्रमसो यथा आर्तेह विद्यमानेऽपि संसते न वर्तते ध्यायतो विषयानश्च स्वप्नेनर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवता षोडशविस्तृतम् एवं चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन परसो देहानुपादत्ते विमुच्यते हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं च अनेन विन्दति तथा तृणजलूकेयं नापा नापयात्यपयाति च नात्यजेन म्रियमाणोऽपि वागदेहाभिमतिं जन यावदन्नं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्राभूतनां भवभावनं यदा चरितान् ध्यायन् कर्मण्य चुनते सकत् सति कर्मण्य विद्यायां वन्द कर्मण्यनात्मनाम् अतस्ततः पवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यतदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः नेत्रोवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोग योर्गतं विदश्यामुमामन्त्र शुद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनवरहि राजर्षि राजसर्गा विरक्षणे आदिस्य पुत्राणः नमत्तवसे कपिलाश्रमं तत्रैकाग्रमनः वीरो गोविन्द चैणाम्बुजं विवक्ता सङ्गोऽनुभजनः भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदत्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणानगो याश्राव इद्य शृणुयात्मा लिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानौ देवर्षिवर्यमुखनि शतमात्मशोचं या कीर्तमानमधिगच्छति परमेष्णौ नास्मिन् भवे भ्रमति मोक्तसमस्तबन्धो अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतौ एवं स्त्रियाश्रम पुंसच्छिन्नो मूत्र च संशयो। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पांचस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हि नारद संवादो नामैकोत्रिंशोऽध्याय पाठफल श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। नन्दादि गोकुलत्रात दाता दारिद्र्य दुःखभञ्जन सर्वमङ्गलदाता च सर्वकामप्रदायक